हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। आजकल एक टॉपिक बहुत ट्रेंड कर रहा है, दैट इज़ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। ये वीडियो में मैं सिर्फ मैं खुद की ओपिनियन रखने वाला हूँ। व्हाट आई थिंक अबाउट दिस टॉपिक। वन थिंग इज क्लियर दैट यूट्यूब and TikTok both are different kind of platforms. One thing I have to make clear that there is no competition between YouTube and TikTok, because Lamborghini is Lamborghini, Luna is Luna. You cannot compare both of them. But the problem here is the TikTok videos. I had seen so many people are doing some bad stuff in TikTok, जो करना नहीं चाहिए. Even it was there in YouTube before, but YouTube had controlled it in such a way that it is no more available now, such contents. मैं क्रिंज के बारे में बात कर रहा हूँ अभी. That cringe content, I will show you some of the clips right below or somewhere here. So what I think is, it's not good. Cringing is not good, bro. What तुम लड़के से लड़का बन जाते हो, it's not good. That's called racism, gender racism, कलर रेसिज्म. में कुछ वीडियोस देखा, इधर कुछ ब्लैक रहते हैं फिर ब्लैक से वाइट बन जाते हैं. ब्रो कम ऑन, यू कांट डू रेसिज्म, यू कांट डू दैट. और कुछ लोग बता रहे थे कि हम वीडियो बनाए तो तुझे क्या, आपको क्या प्रॉब्लम है करके पूछ रहे थे कुछ लोग. बट द थिंग इज, where you are putting it, you are putting it on a social media, right? Everyone watch it, even children watch it. People will watch it, man. You cannot stop like that, and you cannot produce such videos, such cringy videos. There is a lot of like inappropriate content, like exposed. Among 10 videos, in 5 videos will be inappropriate. And it doesn't mean that whole TikTok is not good. There are some very good creators among in TikTok, but the TikTok is only promoting the bad ones, only promoting the cringy ones, and कुछ दूसरे लोग भी उसी के ऊपर वीडियो बना रहा है. और एक मेरा प्रॉब्लम है YouTube का वीडियो डायरेक्ट डाउनलोड करने का और टिकटॉक पे अपलोड कर देने का. ऐसा लोग करते हैं. इट इज़ प्योर इलीगल. बट इन टिकटॉक देयर इज़ नो कॉपीराइट लॉज लाइक एज यूट्यूब. सो इट्स नॉट गुड. एंड कुछ यूट्यूबर्स भी, कैरी मिनाटी भी एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर. दैट वीडियो वाज ट्रेंडिंग एवरीवेयर लाइक एनीथिंग. So now that video is taken down. So हम कैरी मिनाटी का बहुत सालों से फॉलो करता आ रहे हैं कुछ लोग तो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. So yeah, we got to think about this, man. आप इसके बारे में सोचना पड़ेगा, because you have a lot of people. Okay, Carrie Minati has got a lot of a fan base. Okay, that to true fan base. So people get offended. YouTube के लिए वीडियो बनाया, YouTube ने ही खुद YouTube ने ही डिलीट कर दिया. So you got to think about the laws and that strictness of the laws of YouTube. That's the only point I'm telling you. YouTube will never ever suggest a cringy kind of content, or so ultimately YouTube, I hate it. It's my opinion. I'm not triggering any personal here, no hate for anyone. So
एंड कुछ कुछ लड़कियों के वीडियोस भी देखा, दोज लड़कियों उनके दे आर मिस यूजिंग दैट. वन मोर थिंग आई डोंट लाइक इज टिकटॉक इज फ्रॉम चाइना and presently you know the situation how it is because of China. Almost for 2 months we were in complete locked in our homes. So और उसके ऊपर ऐसा सब ट्रेंडिंग चल रहा है अभी. मैं कभी भी YouTube को कम नहीं समझता. YouTube is always a big thing because it is a source of information. Or a lot of people had made informative videos. You can check it out. Even you can check out my videos also. I had been so many places and I made a lot of videos. I posted them here, but still I don't get any support from people. But only what people also need is the cringe. People are promoting that only. I'm not telling the TikTok is bad. TikTok has to improve some of the points, like there should be a copyright claims, so that other platforms means content is not being directly uploaded from the somewhere else, so the creator is not being credited. I don't support this. There should be a credit, but TikTok has to stop means suggesting the cringy videos, and they have to think about the people who are actually working for them, actually making a good content, some very informative and some good content who are producing. They has to suggest people. Okay, police here. Okay, ultimately this is my point. So if you are new here, consider subscribing. आपको मेरे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं. अच्छा वीडियोस बनाता हूँ मैं भी. This channel is all about the traveling and oh wait. Okay, this channel is all about traveling and cinematography and gadgets, so many things. But if you are new here, please check out my channel. You can support me by subscribing. Okay, कुछ लोगों ने TikTok में कहा था कि एक TikTok वीडियो बनाने के लिए 4 आवर लगता है. मैडम, कभी Adobe Premiere Pro यूज़ किया हो? यूज़ किए होते तो ये शब्द नहीं आता. कभी कभी मैं 20 मिनट का वीडियो 8 आवर रेंडर होता है मेरा, और उसको एडिट करने के लिए मुझे 3 से 4 दिन लगते हैं. 3 से 4 दिन. वो भी इतना हैवी फाइल्स रहते हैं कि अराउंड 50-70 GB तक रहता है. एक 4K का फाइल. तुम 15 सेकंड के लिए इतना बोल रहे हैं, हम 20 मिनट 40 मिनट वीडियो करते हैं मैडम. मैं भी किसको समझा रहा हूँ, छोड़. ओके, फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि कि यूट्यूब में भी कुछ गलत लोग थे, और यूट्यूब ने उसको सुधार दिया. जो भी inappropriate content था, YouTube has stopped suggesting it to the crowd. TikTok is still doing that. If the video is not worth to watch, or it's just shit, it's just a waste of time, then it shouldn't. TikTok should not suggest it to other crowd, but actually TikTok is doing it. That's what I have to say. That's what people concern is there. Actual
our efforts, actual people's efforts, is not being shown. It is not being promoted, is not being suggested to the crowd. Wow, man, look at this. Bangalore is Bangalore, man. So beautiful, so very much beautiful it is.